Hey guys, welcome to another episode of Press Start to Play. And this is your host Ayush from Gamefine. And joining me today is Manas Joy, Sushir Rahman, and Darren Rodriguez for a very special episode. After 10 years, 10 plus years, we finally have another GTA on our hands, right? And the trailer came out 12 hours before it was supposed to. So much planning, GTA 6 so रिलीज much हो गया planning is done. So much planning is done, and then the trailer comes out 10 hours before it's supposed to. The person who was in charge of it was sleeping when the trailer came out. But yeah, that has got me thinking, guys. Where were you when GTA 6 trailer dropped? Where were you guys when GTA 6 dropped? Manas, starting with you. या मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शाम को 7:30 बजे आएगा, तो मैंने सोचा था क्या पता स्ट्रीम वीम भी करूंगा, ऐसे सोचे तो बहुत चीजें थी। एक 1.5 And- मिनट की स्ट्रीम ऐसा वो एक्चुअली वही मेरा थॉट था कि मैं करूंगा क्या यार, इतनी बकवास भी नहीं कर सकता मैं। लाइक आई डोंट हैव एनी फेक आउटरीच टू स्पाउट फॉर 1 आवर, तो मैं कहा मैं बोलूंगा क्या पसंद आया, सुंदर लग रहा है। बट आई वोक अप रैंडमली लाइक ऑफिस के काम से लाइक 6 बजे, एंड मैंने कहीं ट्विटर खोला, देखा कि रॉकस्टार का ट्वीट है कि ये हमारा ट्रेलर है, देख लो। मैं 2-3 बार ही पढ़ा वो नाम यूजर नेम की, ये असली रॉकस्टार है, कुछ मतलब क्लिकबेट तो नहीं फालतू। मैं कहा यार ये, और मैंने बिफोर आई इवन सॉ द ट्रेलर, लाइक मैंने ओरिजिनल पोस्ट ढूंढा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि मैं आई चेक कि ना ओरिजिनल पोस्ट में टाइम क्या है, फिर मैं जाके कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको आईएसटी में। मैं ट्रेलर नहीं देखा, आई कुड नॉट बिलीव इट कि ऐसे कैसे, लाइक एंड देन आई या आई वाज asleep and I woke up and the first thing I saw was holy shit, it's out. What about you, Sushir? You were probably in the most accurate game accurate place that you could be for the trailer. लो accurate. And the thing is that I have a story, but it might sound unbelievable, so I'll keep it for the last. Okay. Okay. I have a story for this. I have a story. It'll sound completely crazy, but trust me on that. ठीक है? मैं तो I'll like keep it मैं for तो the वैसे मैं तो like for me I am a patient gamer now, right? Like for totally. तो वो ट्रेलर आया, मैंने कहा अच्छा। पहले मैंने रेडिट पे देखा एक्चुअली। I saw it on Reddit. Boys, the trailer has dropped ऐसे करके उस पे लिखा था कुछ। तो उसमें फिर मैंने कहा अच्छा let's check it out। तो फिर मैंने then I turned on the TV, put it on। मतलब ऐसे कुछ बहुत मैं एक्साइटेड नहीं हुआ वैसे, क्योंकि मैंने अभी GTA 5 खेला भी नहीं है कभी इतना बहुत ज्यादा। Wait, you haven't फिर played मैंने वो finished the ट्रेलर story? देखा। GT5 नहीं खेला? क्या स्टोरी? नहीं यार, मैंने वो पहला मिशन ही खेला था उसमें बस, like the first mission where they Shooting come the out of cops. shooting the cops. अरे I Call of couldn't Duty do it जैसा just फन तो like है, Elon Musk. इट्स गुड फन, मतलब एक बार ही खत्म करने लायक तो है। मैं कह तो रहा हूँ just like Couldn't Elon do Musk, I couldn't do it. Just like a so I think मैं और Elon Musk same उस पे है, same उस which is not अगर not अगर a- बैंक not a में पैसे जाके compliment. डिपॉजिट करने होते तो यू वुड हैव बीन अप फॉर इट। इफ द मिशंस वर हाँ, लाइक बैंक स्टैंड जाके इन अ deposit करने लाइन। Draw नहीं करना. सही बात है। But yeah, तो मैं I saw it before dropping the kids to school, or before going to pick them up actually, before going to pick them up. So yeah, right in the middle of the day, pretty easy for me. अच्छा दिन था, फ्री था, आराम से बैठ के देखा। उसके बाद ना, here's the thing, मैंने GTA 5, GTA 6 डाला उसमें, ठीक है। Trailer is like the 4th recommended option on YouTube right now. उसपे live stream, 100,000 secrets. This is what I think of the GTA 6 trailer, and these videos are like 1 hour long, 30 minutes, 9 minutes, and the trailer itself is 1.5. और मैं देख रहा हूँ उसको, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इस गेम में क्या होने वाला है, apart from like इसमें लेडी प्रोटैगनिस्ट होने वाली है, which we'll talk about later. ठीक है। So Darren, where were you when this trailer dropped? I woke up at 9:30. ठीक है, फोन खोला और मैंने ना I had Slack notification, तो मैंने Slack खोला अपना, एंड उसमें एक हमारे वर्क चैनल पे लिखा हुआ था GTA 6 ट्रेलर एंड लिंक। मैंने कहा है, फिर मैंने फटाफट WhatsApp खोला देखने के लिए, एंड हर एक ग्रुप में लाइक था GTA 6। तो मैंने कुछ नहीं करा, मेरा ना मीटिंग स्टार्ट होने वाला था, मैंने सीधा उठा, टीवी ऑन करा अपना, जो ये टीवी है पीछे, चश्मे पहने और ट्रेलर लगा दिया, और बैठ के 2 बार ऐसे बस बैठ के देखा मैंने कि क्या हो रहा है, क्या है ये, एंड फिर जाके मैंने कहा अच्छा अब जाते हैं मीटिंग में अपनी। तो दैट इज हाउ आई वोक अप। लाइक भाई इतना खुश था ना, ऐसे अच्छे से उठ के चश्मे वश्मे पहन के रेडी, तो एक्साइटेड होके ऑन करा टीवी और देखा। इट फेल्ट, आई डोंट नो, it felt a lot of fun to just get up and have GTA 6 का trailer waiting for you and not being spoiled सही है। because you have to watch it quick या कुछ। I think I got some spoilers before the trailer launched, and I'll tell you why. Okay. अच्छा। So
थोड़ा शाम फ्लोरिडा का में शूट हो रहा था ना वो, इसलिए and it's बाहर ही देख peak, लिया। it was a peak Florida moment. It was a peak Florida moment. मेरे मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आया है कि लाइक यू नो बी केयरफुल, इज अ गेटर इन द एरिया, ओके, कम्युनिटी अपडेट आया, ठीक है। और मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है, मैंने अभी तक गेटर नहीं देखा। तो मैं क्योंकि मैं कुछ दिन अगर पहले मुझको वो देखना है, आई वांट चेन्नई वाला गेटर देख रहा था, एंड आई वाज लाइक अरे मैं खुद फ्लोरिडा में हूँ, मैं अभी तक गेटर नहीं देखा, आई वांट टू सी। तो आई हैड गॉन टू लाइक वो बालकनी साइड में जाके मैं हटा के मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से दिख जाए कुछ गेटर वेटर, ठीक है। ये पानी है सामने, थोड़ा मैदान है, पानी है, घास फूस है, तो मैं सोचा था कि यहाँ पे हो सकता है गेटर, देख लूं थोड़ा, ठीक है। और कम्युनिटी अपडेट आया, उसके साथ साथ आया कि जीटीए का ट्रेलर, एंड आई लाइक क्लिक एंड लाइक जीटीए का फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड इट ऑन माय मोबाइल, पहली बार, ठीक है। तो मैं मोबाइल खोला और देख रहा हूँ यहाँ पे भी गेटर दिखा रहे हैं, आई एम लाइक दिस इज शिट, दिस इज लाइक अ पीक फ्लोरिडा मोमेंट। आई वाज लाइक लुकिंग आउटसाइड फॉर अ गेटर एंड देन द गेटर ड्रॉप्ड इन, एंड आई वाज लाइक अभी तो नहीं होने का था, बाद में होने का है, ट्रेलर अभी क्यों ड्रॉप कर गया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे समवन यू नो इवन रॉकस्टार इज नॉट इम्यून फ्रॉम दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, समवन वांटेड टू ruin their party too. So but seriously, most of the stuff that is shown there I have seen already. Apart from the gators yet I'm still still waiting. तो कंज्यूम तुम्हारे जैसे लोग लीक कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो इस तरह की चीजें लीक हो रही है। सुशीर is मैं enjoying देखता the भी नहीं ऐसी industry. चीजें भाई। हाँ, The gators look accurate, so I like the game. शीर कैन कंफर्म। Oh, that's उन्होंने कहा crazy, रेड डेड man. में केटर्स डाल दिए और फ्लोरिडा में हम गेम बना रहे तो डाल ही देते हैं। It's रेड डेड में काम कर literally दिया हमारा। like that kind of an area. Like मैं देख रहा हूँ कि वहां पे पूल है, गेटर है, क्या दिखेगा कि नहीं, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, अचानक से GTA 6 उसमें भी गेट है। yeah, but सही है। what did you guys think about it? Like that's what the opinion is. तो आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम। मेरा हाँ। इनिशियल थॉट तो यही। Ayush, And we want to can you dig deep into that. हाँ, can you elaborate? Elaborate. Yeah, yeah. हाँ, ये कुछ तो मुझे नहीं लग नहीं, रहा आई है। डोंट वांट टू, आई डोंट No, वांट टू please. एलैबोरेट Why will you not? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अच्छा आयुष ये You are on camera. टेल मी नहीं, एक्चुअली व्हाई डू यू मैं थिंक बताता हूँ, आई सॉ दैट एक तो पहले मैंने लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड GTA 5 इज, मैंने बहुत नहीं खेला, आई हैव नेवर बीन अ GTA पर्सन ओवरऑल, क्योंकि लगा आई डोंट लाइक दिस लाइक ओपन वर्ल्ड, बहुत सारा कुछ करने को, रैंडम चीजें हैं, कुछ भी कर लो, इतना टाइम पास टाइप्स प्लस। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज कि जब वो 4 भी मैंने नहीं खेला फीमेल क्या? प्रोटैगनिस्ट, ओह सॉरी आई थिंक थोड़ा सा खेला है मैंने। वो RDR वेलिक 2? वाला कौन सा है, निको वेलिक वाला कौन सा है? 4 4 वो है ना, हाँ, तो निको वेलिक वाला मैंने खेला है काफी, आई थिंक लाइक आई प्लेड लाइक 60% ऑफ इट। ओके RDR 2? RDR 2 तो तेरे के रिकमेंडेशन पे तो खेला है यार भाई, तेरे तूने बोला था Cowboy स्टोरी guy. कंप्लीट करो। हाँ, कॉबॉय गाय। मैं एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांट टू से, आई विल फॉलो अप विद दिस। तो मैं व्हाट आई एम सेइंग इज, वो मैंने फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखी, मैंने कहा ये गेम तुमसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। मतलब आई फील देयर आर, मतलब जैसे वो लोग बोलते हैं ना, लाइक जैसे लाइक आई कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ women or like female culture in general say like we want more games with women in them so that they can like feel empowered or like feel they can put them in place. I completely agree with them, because when there is a woman character, I'm not able to connect with that character at all, like zero. तो आयुष यहाँ पे are there any like major games जिसमें like you felt कि ये मिस हो गया because of कि नहीं वुमन कैरेक्टर है जैसे इसमें? मैं बताता हूँ, जैसे Assassin's Creed में कुछ एक तो आई थिंक Odyssey. फ्यू सीरीज, वैलहैला जैसा है ना, वैलहैला इज बेसिकली दैट गेम इज मेड विद द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन माइंड, एंड द मेल इज जस्ट लाइक ऐसा, मतलब an option given to you. पर मैंने वो पूरा मेल से खेला है, like that's how I played the entire game as male. Same with like वो क्या कहते हैं वो ग्रीक वाला था, और उसके बाद there is Horizon Zero Dawn is the only game with the female protagonist that I finished top to bottom, मुझे लगता है। It's just because Sony game, Last so I of have to Us? pay my dues there. Last of Us 2 हाँ, Last of Us again is a little, मतलब Last of Us 2 is a little difficult। मतलब जोर वाला पार्ट तो मुझको लगा था like I was, बट उसमें एटलीस्ट मतलब I वन was ऑफ देम feeling वाज it. प्रीटी मैनली ना। काफी वाला, हाँ, yeah, I know, I didn't want to say that you said that, Manas, I didn't do it, but I am also the person मजाक that कर रहा था। who liked Animal and Kabir Singh, no, that there is some toxic masculinity in me that I like, that I enjoy watching, so I think sorry to interject. Ayush was like वो Horizon Forbidden West का लीक आया था ना कि यहाँ पे हल्के हल्के थोड़े मूंछ दिख रहे हैं। Ayush was like अब खेलूंगा मैं ये।
खेलूंगा मैं, अब मजा आएगा मुझे there खेलने। there are multiple games that I've missed out just because like they are female driven and Oh, man. it's not something like मैं मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ वाले बातें जैसे I have not played Resident Evil 2 मतलब it's such a big game but the female protagonist अब उसके बाद there is this like the Metroid series I've never played because Tomb Raider? obviously Samus Tomb Raider I've never played that is true it's a true thing Oh, shit. मतलब ठीक लास्ट वाला तो अनचार्टेड? लास्ट वाला Uncharted कौन सा आने Lost वाला Legacy, Legacy, जो- Lost Lost Legacy. Legacy. नहीं वो भी नहीं खेला मैंने I've not Oh played that yet. shit. I am getting it all right. Oh my god. मानना पड़ेगा. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। स्पाइडरमैन में जैसे मेरी जनरल सेक्शन आता है आयुष कंट्रोल फेंक देता है हाँ नहीं मैं अंश को देता हूँ अंश आयुष अंश को दे रहा है, खेल तू खेल। वैसे यार आयुष इस लाइक आई Platform फील लाइक interaction. गिवन द अपॉर्चुनिटी आई मे बी द ऑपोजिट स्पेशली अगर थर्ड पर्सन गेम हो तो मेरा थॉट है आई I've heard you say this before I have Same, this I've heard to you say look this at before. this character's ass for like maybe 50 hours. So no, why not be like a Yeah. hot ass or something? Unless नहीं it's ऐसा Metal Gear जैसे Solid. Diablo 2 है like Diablo 2 is such a like big game right like जैसे if you can spend hours and hours on it and like when it actually launched when I was playing video games and it launched in front of me ठीक है at that point of time Amazon and Sorcerer were some of the best characters you could play with and Rogue पर मैंने and I played like hundreds and 200 hours upon it and never played with those characters I've never played an Amazon I never played a Sorcerer I never played a Rogue I played Necromancer Barbarian I played Paladin I've never played those three characters it's and for me it's not something like कि मैं ऐसा कुछ hate करता हूँ I just like I want to feel immersed into the game that I'm playing so I just prefer being put into the shoes of a male character ऐसा बट and आयुष it hurts me overall as well जैसे हाँ Ayush, sorry please go on. comment below, okay? You know, any game with a female protagonist, and Ayush is going to personally comment saying no, he hasn't yes played. no yes no Oh, yeah, yes no no yes And he No, also Horizon उसको Zero Dawn I कई think I played so I don't remember any other that I would have 20 questions but Ayush specific version कहीं कहीं क्लिप करके इसको रेडिट वेडिट पे डाल दो यार. बिल्कुल ऐसे ही वायरल. ऐसे ही असनामी को views आ भेज दो जाएं, ऐसे ही व्यूज आ जाएं but ऐसा but what I would say this so I would play this game if Sushir plays it and recommends it कि story अच्छी है that I will play this game because like, RDR के case में I completely took Sushir's recommendation and like slogged through that first half for the third time but I was completely blown away by the end of the game so if Sushir says yes Ayush's story is like good enough at the end of the time so I'll pick it up so that's it but yeah this is my controversial take on it finishing up now But you if guys if it has a handle main, this. if it has a male guy, would you play those parts? I don't know like I don't know if it's possible to play just like अरे with ये the male अंश से guy. I थोड़ी don't- खिला I- सकता I है don't बाकी think so. पार्ट. वेट करना पड़ेगा उसको अगले GTA तक उसके लिए Crazy clip. This is going to be a clip. ये तो सही है. No, you guys try to put out this dumb stuff I that I've started. Yeah. इसमें लेकिन वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज पता नहीं लोग कुछ कह रहे हैं कि यू नो इट लुक्स बैड बट द लाइटिंग इन दिस गेम लुक्स फिनोमिनल टू मी इवन दो इट्स कट सीन लाइटिंग मोस्टली बट you know how Red Dead का lighting was amazing and it was so atmospheric and beautiful to look at इसमें वही vibes like every shot that we've seen it feels like it has वो जो color it's almost ray tracing I don't think it is but इतना vivid colors है हर एक scene में कि देखने में lighting मजा आ रहा है यार इतना atmosphere है उसमें what do you think atmosphere master Manas या नहीं वो पहले वाले जो दो शॉट्स वगैरह उसमें तो डेफिनेटली मतलब पानी look दिखाया से था भी इसमें होती. पानी भी दिखाया था एंड ऑल्सो ये ऐसे जो एनवायरनमेंट दिखा रहे दिस तो लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ Red Dead दोस बर्ड्स फ्लाइंग एंड yeah तो वो सारा देख के तो मतलब द विजुअली आई थिंक इट आई मीन GTA 5 में भी था वैरायटी बट आई रियली फेल्ट कि इफ यू गो हंटिंग एंड ऑल लाइक अ फॉरेस्ट वाला पार्ट ना दे वर नेवर लाइक दैट बिग एटलीस्ट लाइक कंसोल पे खेलो मोस्टली इवन ऑन PS5 लेकिन उतना मतलब जैसे PC पे यू कैन मे बी फील द डेंसिटी अ लॉट मोर या मॉड करके वगैरह वो उतना GTA में मुझे लगा था 5 में वो वैरायटी में भी नहीं है मैप में विथ लाइक GTA का पर्पस ही वो नहीं इट्स लाइक अ रियलिस्टिक लाइक एरिया बट इसमें आई एम हैप्पी टू सी कि ना ऐसा लग रहा है कि देयर इज मोर वैरायटी इन द लैंडस्केप्स क्योंकि इनिशियली जब वो बीच वगैरह दिखाया था तो लाइक इट लुक प्रीटी ऑसम एक तो यार ये जो द क्लिप्स दैट दे शोइंग इस गेम में विच आई वंडर कि इज देयर लाइक अ सोशल मीडिया सिस्टम इन दिस गेम एंड लाइक डू यू गेट टू पार्टिसिपेट लाइक ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ ऐप खोल रहे हो एंड यू गेट टू सी अ फ्यू क्लिप्स जैसे GTA 4 में 5 में थिएटर एंड टीवी वगैरह है लाइक आई होप इट्स मोर लाइक कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व एंड लाइक अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है वायरल लाइक गो देयर एंड सी इट हैपन विच सम ऑफ देम ऐसा लग रहा है क्लिप्स भी दिखा रहे हैं सेम चीज़ को इन गेम फुटेज भी दिखा रहे हैं
that variety that they're showing is pretty cool. Also, are you sure to your That question? could be your like, side missions. that would be a great way to, है ना, social media Upload पे a देख TikTok clip. के Yeah. TikTok live हो रहा है and you're going there to you're like see going what's there, happening. yeah. यार इसमें playable characters में is it confirmed कि only the female character is playable? No, You can- two, Right. right? It's both of them. they've not Okay. confirmed it as yet. Yeah, but दिखाया like है it's- कई सारे shots में, but Okay, it's like okay. Like a Bonnie and I'm Clyde not kind sure. of a thing. Okay, right? these two are a couple Yeah. also, मतलब है ना, couple है ना. Mm-hmm. What's the Yeah. guy's name? किसी को ये सबको लड़की का नाम याद है? उसी Like का the नाम Muslim क्या है? blacking out. Lucia. Lucia. Lucia okay. नाम है उस बंदे का तो हाँ. अच्छा I think Jay से कुछ नाम है बंदे का. Anyways, yeah, I'm interested in like Jason. the story. Jason है क्या? It could be. But the story जो दिखा रहे, it looks like it could be kind of fun, क्योंकि GTA 5 का मुझे लगा था the story was, I mean complexities है if you really dive into it. लेकिन GTA 4 में जो weight था story में, वो तो like वो फिर से explore नहीं किया in the same way. Maybe in Reddit they had a heavier story. I really hope कि इसमें story पे भी वैसा थोड़ा और focus हो. In like being a little gritty also. Like funny stuff तो GTA 4 में भी था. GTA 5 felt like mostly just funny and action stuff. Like वो gritty stuff थोड़ा missing था. And I hope थोड़ा vibe भी ऐसा है with that city also कि they can go in that direction. What all? Also, जैसे there- Go on. sorry. कौन Darren, बोलने go. वाला है? Okay. I was just saying that you were mentioning gritty vibe. I think like given that it seems to be a Bonnie and Clyde like type story, there might be some like very emotionally charged moments in the game where there might be decisions. Like in this scene, she's getting out of prison, right? And in the cover art of the game, she has an ankle monitor on her ankle, which means that she's probably on probation. She starts doing things, and then like how they used to limit you in other games, like you can't go to this area until like certain mission. वैसा होगा कि you can't go out of this area, otherwise वो आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी तुम्हारे लोकेशन पे to arrest you. So I think it will be like that. And again in this trailer they themselves like show वो एक scene where she's sitting on top of him, she's like trust, and he's like trust. So I think there might be a very interconnected story यहाँ पे. I hope it's like an interesting one of like love in the way of like, you know, वो वाला love, toxic love, and you know, dealing with crime and stuff like that, and how you try to, maybe they're trying to get out of the game, right? It could be that as well, and one is wanting to stay in. So वो देखने में interesting होगा. I feel if they do that. Just hopping on that, I have complete trust in Rockstar. Like even their like वो table tennis वाला game, I think it was good. ठीक है, तो ऐसा में I am coming from that kind of a place. तो Rockstar GTA बनाए या Red, I think they are going to hit it out of the park. And every beat of this trailer showed that they are at the top of their craft right now. This is going to be 12 years for the console players, and 2027 for me personally when I get to play GTA 6. But it's going to be all right. अब तो ले ले PS5 सुशीर, PS5 ले ले यार, अब तो हर जगह मिल भी रहा है, स्पाइडरमैन के साथ मिल रहा है. 2025 में PS5 Pro लूंगा डायरेक्ट. जहाँ पे which comes to the next thing that me and Manas were discussing behind the scenes is that I made some small silly predictions on Twitter, and it's supposed to be a little spicy. So I said there'll be a 1-year console exclusivity. I hope that comes true. It was going to be in fall winter 2024, but they are now saying 2025, so that went out of the park. Then there's not going to be an online component at launch, I feel, Okay. just like it had happened with the previous games, GTA Online or Red Dead Online. And I think this is the first game that is going to breach the $90 price tag for the standard game. I think this one, if they put it out there at $90, people will still buy it. There'll be some controversy, but people are going to still go ahead and buy it. And further to, I have added 2 more. It's that this is going to be 30 FPS for the current gen consoles, which is the PS5 and the Xbox Series X at launch. This is not going to be 60. I don't think Ray tracing this होगी game. सुशीर. I don't know about that. I don't know what that is. GTA 5 has अगर ray ray tracing tracing- in it now. Ray tracing और On 30 FPS consoles. हुआ तो I think फिर भी चल जाएगा काम, to be honest. But if it's like 30 FPS and no ray tracing, I think that will be like no. I don't think that will वैसे be GTA enough. 5 का ray tracing is like very simplistic, मतलब ज़्यादा कुछ, मतलब if you turn it off या on, मतलब it doesn't make too much of a difference, like कुछ पता नहीं चलता है difference, but it's not like on a big scale. Go on, Sushi. Like, given the kind of assets and given the kind of crowd density and Yeah. the kind of stuff that they're showing off,
I know people might get angry for me, saying this, but I don't think this game will hit 60 FPS at launch at all. It's not. I don't think it's possible. Rockstar, do it for 2024, Sushir. 25. Yeah, please do it for me. Like, I mean, I would be more than happy that if it is, देखो अरे वैसे they've मुझे not लगता है put Red Dead at 60 FPS still. Red Dead 2 Mhm. on the Yeah. PS5 or Xbox at 60. on So the I Xbox mean One you it's can a play it, right? Red On the Dead 2 Xbox on One, the on the Xbox Xbox Series X. Series X you can play it on 60 FPS. Series X Red पे Dead Red Dead 2 2 is Oh, sorry, Series not the original Red Dead Red 1 Dead. you can play 60, PS5 पे भी Red Dead 1 Red is Dead now 1. 60, Red Dead हाँ 2 Two on अभी the भी दोनों में 30 है. हाँ 30 दोनों पे Yeah. 30 है on the Series X it runs at 4K though तो it visually it looks Mhm. pretty good 4K पे but वो 30 है अभी भी 60 नहीं है but मुझे लग रहा है यार डायरन वहाँ पे ना लाइक दे कैन आई थिंक द मशीन इज केपेबल ऑफ लाइक वो पैच हो जाए और 60 पे चल जाए Red Dead 2 बट आई विल से दिस लाइक yeah it is है ना मतलब पॉसिबल हो पैच नहीं किया GTA 6 का जो मैं अब तो नहीं आएगा वो पैच थोड़ा कभी तो आ सकता मतलब- है मतलब मे बी दे विल होप तो करना रखना चाहता हूँ बट विद GTA 6 आई काइंड ऑफ अग्री विद सुशीर के ना ये शायद 30 पे होगा ऑल्सो लाइक अभी आई कैन रन द ट्रेलर्स फॉर Red Dead 2 एक्चुअली ये मैं नोटिस किया है लाइक Red Dead 2 का जो ट्रेलर था इट डजंट लुक दिस गुड इन द गेम ऑन द PS5 और द Series X लाइक 4K पे इट डजंट लुक दिस गुड लाइक एज इन विजुअली वो आर्ट स्टाइल ऑफ कोर्स स्टिल शाइन्स थ्रू लाइटिंग वगैरह बढ़िया है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है बट ड्रॉ डिस्टेंसेस द क्रिस्पनेस ग्रास डेंसिटी वगैरह कुछ भी इज नॉट लाइक हाउ इट लुक्स इन द ट्रेलर तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑल्सो ऐसा नहीं कि Red Dead 2 को जो ट्रेलर में दिखाया उसके बाद जब मैंने गेम खेला तो आई वाज थिंकिंग कि ये क्या अगली गेम खेल रहा हूँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं था इट्स लाइक अ फैंटास्टिक गेम बट आई डू वांट टू काइंड ऑफ आई थिंक इवन द GTA 6 ट्रेलर लुक्स इनक्रेडिबल आई वुड 1000% लव टू हैव वो जो विजुअल्स है ऑन कंसोल व्हाई नॉट I think everybody will want that. I don't think it's going to look that good. Like इस पे a lot of the sections you can see the grass density जो creatures पे वगैरह details है जो animals पे details है. It's not the same on the Series X 4K पे console पे भी ना. And same I would say even for like looking back I can also run like मैंने इसका भी trailer ready रखा था GTA 5 का like this launched on the PS3 but जो trailer है it doesn't look like a PS3 game and it doesn't look like how it looked on the PS3 even though PS3 पे उस time पे तो like my mind was blown ना उस टाइम पे आई थिंक साइमल्टेनियसली दो गेम्स But GTA 5 I think objectively looked better on the PS4 oh and yeah it kind of reached like even reached higher levels of popularity when the PS4 when it launched on the PS4 There was वो just एक ही साल बाद it was आया like था। on the trade वाला game था ना हाँ like वो but 1 it year like वाला really reached popularity in so just इसलिए मेरे दिमाग में ना जब कई बार मुझको लोग जैसे GTA 5 बोलते हैं like I think of it as like a PS4 gen like gen game hey they mostly. quite quickly stopped supporting the PS3 क्योंकि PS3 का आई थिंक डिफॉल्ट जो एक यूनिट था which had like 12 GB of internal storage तो it couldn't like and उस टाइम पे even though the game ran from the disk like but enough storage थोड़ा हार्ड ड्राइव पे चाहिए था and वो था ही नहीं करके they stopped supporting also but at launch it didn't look like I mean this trailer I mean currently PS4 पे and PC पे and even PS5 पे GTA 5 looks much better but this is not how the game even looked at launch on the PS3 उस पे भी मुझे लग रहा है कि मे बी GTA 5 may not be PC पे तो फाड़ू लगेगा no doubt है ना Red Dead GTA 5 everything looks above and beyond on PC than how it looks in the trailers तो PC पे तो I am sure console पे this looks incredible but I cannot I want to see like जैसे Red Dead का if you notice जो पहला जो ट्रेलर आता है it's like more cinematic shots GTA 5 का भी GTA 6 का again you can see but जो actual gameplay जो ट्रेलर आता है ना behind the back camera थोड़ा actually हो रहा है कुछ कर रहा है at a stretch 2-3 मिनट के लिए those are like more representative of what the visuals will actually look like this is like a great tone piece and setting अभी I also think Yeah. sorry I just got a little, sidetracked when I was talking with Manas regarding this, and I said, "Okay, for Red Dead 2 to same दिखता है." But the thing is that what was not playing on my mind that I played that on the PC, and what they showed in the trailer was very representative of what finally came out to the PC, but quite some time late. And that's why I think the kind of fidelity that they're showing is, I think it's possible, but there are going to be some like cutbacks थोड़ा बहुत तो compromise तो रहेगा ही and the compromise I think will come from the fact that it's going to be 30 FPS but I don't have any problem with it yeah and also I think one more thing to add कि ना ये this also reminds me I've seen GTA 5 का footage of like वो Rockstar editor में बना के movies बना के ना it kind of looks कि ना अच्छा उसमें बनाया उसमें the game does look slightly better than it does when you like just चल रहा होता है when you're actually playing it तो maybe वो सारा भी add करके looks awesome though like I have no idea what you're talking about
अच्छा वो उसमें है एक देयर इज एन ऑप्शन एक रॉकस्टार एडिटर करके लाइक Rockstar मेक editor मूवीज इन द गेम on लाइक तुम यू कैन सेट अप शॉट्स एंड एवरीथिंग काफी कुछ तो है, मैंने कभी किया नहीं है बट आई हैव हर्ड अबाउट इट एंड सीन सम वीडियोस ऑफ इट बट ये इसमें द डेंसिटी एंड द क्राउड डेंसिटी द क्राउड वेराइटी लोग जो कर रहे हैं लाइक ऑन स्क्रीन these are like very specific shots and I really hope ki you get to see like the same stuff happening when you're actually playing the game. One I don't thing know how that the TikTok integration will work though. मतलब कैसे like they showed like these vertical slices of a social media, Yeah, right? Like yeah. might be थोड़ा like a सा मुझको weapon wheel दिखा. thing. But like to for what end? That's more like my point. Yeah. ऐसा कि जैसे कि Notoriety, but gain notoriety like in most wanted. मतलब I can kind of imagine आयुष की जैसे एक ऐसा क्लिप you see it on like maybe जो भी गेम का वर्जन ऑफ टिकटॉक एंड देन यू नो कि ना अच्छा ये जगह कहाँ है और यू गेट अ मतलब मार्कर मिलता है एंड यू गो देयर एंड इट्स हैपनिंग आई थिंक दैट कुड बी अ कूल वे टू सेट अप मिशंस आल्सो एंड थोड़ा कॉन्टेक्चुअल लगेगा भी कि लाइक यू आर इन द मोमेंट आई नो सोशल मीडिया वाला एलिमेंट अब मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैंने देखा और मैं जाके गया बट मे बी सम पीपल सही कैन बात है. इंडोनेशिया में हुआ ऐसा. अच्छा ऐसा हुआ है यार So a girl posted photos of her and her boyfriend with drugs with the location, and then the Tulsa. वो उनकी स्पेशल फोर्स को वहां पर आ गई and then they arrested them. And इसमें Indonesia one thing like that very I've strict noticed, on drugs. So one thing that I've seen, like even from these trailers, na GTA 5, Red Dead, and now GTA 6 में, वो scale gets larger. Like in GTA 5, if you play the game, everything looks थोड़ा सा smaller, right? Like वो थोड़ा scale looks off. Red Dead में the scale is much larger. Like horses look just larger. It's the FOV, I don't know what it is, but things look much just bigger in general, and you have more to take in. GTA 6 में it looks to be taking it another step further. At least in these cutscene wala shots and these panning shots of crowds वगैरह, you can see कि it's very dense, but also at the same time there is a lot of scale to it. There's a lot of verticality to it. There's a lot of horizontal like aspect to it. So that is what is interesting me a lot, because if you're playing even in third person, you want to be able to experience how dense and large this world is and feel like you're a small part of it, right? In these games. So इसमें मेरे को वो दिख रहा है like in a lot of these shots, which I think adds to the graphics of the game, because then you can see every single detail. Like ये वाला shot जो था when they're walking through the क्या वो alcohol shop, पीछे if you look at the bottles, they look very very good. मैं जब से लूप हो रहा है मैं वही shot देख रहा हूँ, पीछे bottles देख रहा हूँ मैं कि man those bottles look cool. So it's just that detail because of the, I don't know, the way they've set up their cameras or whatever, but that scale to me is very impressive. Something that Cyberpunk I think does a little bit as Quite well. one. 2.1. I agree. And let me come to this. वैसे- What are your expectations from this game? Like, what are your वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सुशीर की इट विल नॉट सेल एट $90. आई थिंक दिस विल सेल एट 60. इवन 60 पे की सेल होगा because the number of units that this game will sell will probably like जैसे But currently कोई- the thing is 70, right? 70, Currently the 70. AAA Yeah. 70. हाँ मतलब 70 जैसे like whatever is okay. like whatever the standard is. मुझे like I don't think it will like push that envelope of like 80 90 to be fair. Like जैसे सोनी का कोई नया एक्सक्लूसिव आता है right, जैसे Naughty Dogs कोई नया कुछ गेम बनाते हैं every 3 years or 4 years, so they're selling to a much smaller scale of much smaller sample set of audience ना, तो उनके केस में $90 makes more sense. पर I think GT के केस में I don't think that's like anyone who has like any kind of console would probably get a copy of GTA 6 at some point of time so I do not think it will be a $90 game उस sense में. I would be very surprised if this happens वैसे. Okay. I wish I'm Alright, proven guys. wrong about the $90 Yeah. price point and the 30 FPS too. Just can we go around once and talk about like a little bit of the expectations, Manas? Yeah, I don't know man. After GTA 5, like I'm expecting like कि कम से कम GTA 5 जितना fun like story campaign, open world stuff होगा with like a lot of the new tech that they have, denser places, and I think more like active city. Like GTA 5 was pretty active, but और भी ज़्यादा like है ना चीज़ें like more things happening per minute maybe or whatever. जैसे करने मिले and like also more ways to interact with the city. GTA 5 में काफ़ी ऐसा था कि it was a missions where you get to interact and go into buildings and all. In GTA 4 में भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि like there was a lot more interaction maybe, but it wasn't उतना कुछ बड़ा कि
जैसे यू कैन गो इनटू हॉस्पिटल्स एंड शूट अप पीपल, जो क्लिप वायरल हो रहा था ट्विटर पे, बट इट वाज नॉट लाइक कि कुछ मीनिंगफुल तुम्हें करने मिल रहा है लाइक बाय गोइंग इनटू द हॉस्पिटल। आई होप कि लाइक वो सारा वो वाला एलिमेंट थोड़ा सा और हो, ऑफ लाइक अ सेंस ऑफ लाइक बीइंग देयर, वो बड़ा स्कोप में भी बीइंग देयर हो, बट लाइक इन द बिल्डिंग दैट यूर इन, द प्लेस दैट यूर इन वाला वो फीलिंग भी, इफ दे आर एबल टू, आई थिंक दैट विल बी लाइक अ गुड एवोल्यूशन एंड अ गुड डेप्थ दैट दे कैन ऐड टू देयर सिटी वाला वो। उसके या लॉट ऑफ क्रेजी कैरेक्टर्स, मेरे माइंड में सपना है कि जो चैनल है ना ऑल गैस नो ब्रेक्स या चैनल 5, लाइक बस Yeah. वो, हाँ, यू गेट टू प्ले थ्रू दोज थिंग्स, and they feel like a good representation of like what this trailer is hinting at, है ना, like वो देखने मिले, वैसे कैरेक्टर्स मिले, and you get to like in a game के थ्रू वो देखने, like you see a video and you still feel like an outsider, but not कि game खेल के you get like a real experience, but at least you get to participate in a digital वो form. I think that's what I'm like very much looking forward to. उसमें तो I think the grittiness, the seriousness, all of it comes by just being a part of reality and like a reflection of reality, and वो सारे stories पे work करे, that'll be crazy fun, I feel. Darren, what are your expectations I regarding this feel game? like my only complaint with Rockstar games since GTA 4, 5, and Red Dead has been that their main missions have been very restrictive in the way that you can go about them, right? It's very A, B, C, D checkpoint wise. So I really want this game to have a little bit more freedom in the way you can do those things. GTA 5 introduced that with like your heists and your online wala heists as well, where you had options to do things, but not just those like decision making, but how you play it in the mission itself, right? You have vehicles, cars, weapons. It's a sandbox world. So I want the missions to also reflect that, and I hope this game is a good single player experience, because I don't know how much time I'll spend in the multiplayer. So I really hope ki the single player is fun, memorable, and sort of sticks with you like how GTA 4, GTA 3, all these games like Vice City, they stuck with you. GTA 5 not so much to me, even though I played it at launch as well. But I hope it's interesting in that way. I would put mine into like points so that I don't take up your time. The first one is that I want it have more NPC interaction in the form that Red Dead 2 did. Like, the kind of way that you can come up to a character, talk about certain things, or have like different options. I think they're going to try and flesh that out a little bit more. And I think that might be an interesting take on the whole GTA thing, because you're going to meet these, crazy characters out there on the streets. The next thing is that I want it to be a bigger map. I want it to be a bigger map and like a bigger place to go around and see stuff in. I know this is like state of Leonida. That's what they're calling it. This is Vice City. I do suppose they're going to have some callbacks to the previous games, and of course they're going to put in a lot more into these ones. Then of course the second one, the thing that I want is that I want it to have much more varied mission types, just like not only like, oh, go here, do that kind of a thing. Like a little bit of a change up to that kind of a mission type would really mean a lot, because many people were complaining about Red Dead 2 that it was mostly like, oh, going somewhere and doing a particular thing and coming back, and there was a repetition to it. And the last thing is, of course, characters doing much more quirkier stuff. So that will be much more funny. We have seen like wo jo Bigfoot, we have seen the UFO thing. I think if they put in a lot of Florida Man stuff kind of thing over here, that is going to be interesting to me. But that is all. That is all. I really loved the trailer and everything. So Yeah, I hope it's already the fulfilling my characters. expectations. I hope they control well as well. Wow. They're not sluggish. I hope है. आई थिंक इन दी Sure. एंड लाइक आफ्टर प्लेइंग रेड डेड जीटीए वगैरह मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, लाइक ये स्लगिशनेस है, बट दैट आल्सो मेक्स वे फॉर एनिमेशन स्टाइल जो कहीं और नहीं हो रहा है, तो चलो यहीं देख लेते हैं, कोई नहीं, इफ द कॉस्ट इज सम स्लगिशनेस, बट देयर इज, बट आई फील लाइक आई एम बिकम ओके विद दैट बिकॉज ऑफ दैट स्टाइलिस्टिक मूवमेंट एंड ऑल ना, द स्टम्बलिंग, द एनिमेशंस, सब कुछ वो मेरी मजा कोई आता है एक्सपेक्टेशन नहीं है इस गेम से, बाय द वे. कोई एक्सपेक्टेशन. Male character. मेल कैरेक्टर होना, वो भी एक्सपेक्टेशन भी इन्होंने शटर कर दी. Oh दिखाया my उन्होंने एक God. दो. नहीं, मैंने वो ट्रेलर देख के like 2 seconds in I was like, yeah, this game. ऐसा. But no. But like जैसे like this is the world I live in, man. I have to live with this. वो Mad Max Fury, Mad Max में Mad Max नहीं है, नहीं Mad Max में. ठीक फ्यूरियस है, तो कुछ क्या कर सकते हैं यार, चल रहा है बस, दुख दर्द. हीमैन में हीमैन नहीं है, क्या कर रहे हैं हम लोग.
इसमें लेकिन गाड़ियां चोरी होंगी, टेंशन मत लो। yeah. हाँ नहीं, kill the Suicide Squad में the only person that is remaining that's like unaffected is Wonder Woman. So just putting it out there, guys. I'm just not saying anything, but ठीक है. I should be writing articles like there are more men in jails who have done criminal acts than how can this be a woman? We'll go and इसीलिए like कर रहे हो ये सब देखने के बाद और कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बचा ही गया है कुछ और. आई एम सरप्राइज्ड कोई उसके हाथ पे जो बाल है उसके बारे में नहीं बोल रहा, लाइक वो वाले सीन पे वैसे ऑन टॉप ऑफ हिम अरे करे ना and they are कितने both naked. I opened like चालू होगा उसके बाल के बारे में बात हाँ करना। हाँ everybody is like what is this hairy thing and people are like natural है ये तो कुछ और मैंने तो नोटिस भी नहीं किया to be honest like I didn't मुझको तो कई चीजों के लिए ना I think I'm blind to this kind of stuff मुझे लगता है जैसे डैरन बोतल देख रहा है कुछ ना मुझको पता ही नहीं चलता भाई देख रहे ट्रेलर हाँ अच्छा ठीक है एक पुराना आर्टवर्क लीक हुआ था वो फॉर द गर्ल एंड द गर्ल इज more whiter there I think or fairer and they're now saying ke see woke and they're नहीं changed मैं it तो कहता हूँ पुराना पहले जैसे वो GTA का वो निकाल के दिखा लो ग्राफिक्स जो उन्होंने दिखाए थे लीक हुआ था पहले वो जो उसके देखो तो हाँ देखो कितना खराब है यही बना के दिया रंग चेंज कर दिया सारा ऐसा थोड़ी ना होता है यार there has to be a limit to everything that you do. they hadn't put the textures yet. Texture. I like that. फ्लोरिडा का टैन नहीं आया था Oh my god. And some of those things that happen in the trailer are actually real life news. वो जो Gator को हाँ वो निकाल तो रहे हैं, comparison I think yeah. I put out a video. the people with the lady with the 2 hammers and everything, so all of them have some way or the other, from real life news. Just one thing, I love seeing all the old cars back in this. Like we saw I a thought you Saber were going to say GT. asses, but yeah. No, we saw a Saber GT is what they're driving, which looks like a Ford Mustang. We saw a Cheetah on the road, the white color one. We saw a Dinka Jester when they're going down with the GTA 5 vehicle. But yeah, a lot of mix of old, non-HD generation wala GTA cars and also like the new cars on it, which I'm very happy. I love the old cars in GTA, so very happy. वो to जो see them here. सीन में हेयर फिजिक्स और इयरिंग्स का लेके बात कर रहे हैं तो मैं हेयर फिजिक्स मैं वापस जाके वो सीन देख रहा हूँ मैं तो आई डिडंट सी हेयर फिजिक्स इन दैट सीन तो मैं तो बाल देख ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और देख रहा था। मैं तो देख रहा था कि लुई विटॉन का जो लोगो जो मॉकरी है वहां पे उसका नाम है सेंटिनोवा सेंटिनोवा नाम है या दैट मींस 69 in Italian and I was like यहाँ पे हेयर कौन देख रहा है like but yeah it's good to see that yeah the scene there But yeah, that I think if anybody has any final thoughts before we finish this, anyone? Yeah, GT मैंने अपने फैंटेसी क्रिटिक में GTA 6 लिया था, ठीक है, इस साल ट्रेलर रिलीज हो गया, मेरे को पॉइंट्स मिलने चाहिए उसके -15 क्योंकि मैं सुशीर से 2 पॉइंट से हार रहा हूं मैं। सुशीर ने इस बार जो जाल रचा था ना इस बार जाल कंस्पिरेसी जो करी थी उसने इस बार वो मैं सब समझ रहा हूँ इसकी इस बार आई विल लीड द ऑक्शन दिस टाइम ये जितनी चीटिंग करी ना इसने इस बार सब इसके ऊपर भारी पड़ेगी अगले साल इसके 5 पॉइंट तो ऐसे ही काटो कुछ भी हो रहा है तो चीटिंग हो रही है 2 पॉइंट चाहिए मेरे को बस 2 पॉइंट होता है गेम है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टे लाइक ऑन नंबर 4 But anyways, this brings us to the end of the discussion. Thanks for joining us. If you like what you see, please give us a like, share, and subscribe. Hit that bell button and the subscribe button. Let us know what you think of the trailer down below in the comments below, and we'll be sure to respond to them. And yeah, we just passing the notes along. We also have the Game of Indian Awards coming up. The link to that form, which is the only award right now which listens to your voice in all categories, is going to be there, and we just watch you make mistakes and then talk about them. We don't decide for you. So yeah, let your voices be heard in the forms below. But until next week, this is Ayush signing off. We'll see you next week. Bye. Bye-bye. bye-bye.